to Article 191 of the Constitution. My humble submission is, my proposition before your Lordship is, subject to the Constitution and law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court. So, my Lord, my humble submission is that the only authority which can make rules regulating the practice and procedure of the court is the Honorable Supreme Court, and not the Parliament, sir. This is my humble submission. And for that purpose, I'll say that subject to the Constitution and law does not mean that the Parliament can legislate. Subject to law, subject to Constitution, has it been interpreted in Imran Tiwana's case, my Lord? It basically subject to means a restriction, sir. It is not an enabling provision. And subject to Constitution has been dealt with in the case of Imran Tiwana, and I'll come to subject to law after that. 2015 SCMR 1739 at page 1765. 2015 SCMR 1739 at page 1765, para 53. My Lord. The word subject to Constitution do not therefore make Article 137 for subservient to the remaining provisions of the Constitution. All that these mean is that where the Constitution creates a specific bar to the exercise of such executive or legislative authority or provides a different manner for such exercise, then the authority must either not be exercised at all or exercised in such manner as the Constitution permits. It does not mean that provision prefaced with such words is a subordinate constitutional provision. It also cannot mean once the province has devolved certain powers on the local, its legislative, executive authorities faced by the local government. So basically, it is a restrictive thing and says that it's a bar, not a enabling provision for legislation. Then what is the meaning of subject to law? My humble submission is that subject to law does not mean implies the implementation rather than grant of power, number one. It doesn't imply, it implies limitation rather than grant of power. If rule-making power is made subject to legislation, sir, then the rule-making power of Supreme Court will become functus officio. Constitutional grant of rule-making power is construed as a continuing power, sir. So there cannot be any limitations on that or constitutional power given that. It is not an enabling provision. Subject cannot mean subject to legislation, sir. If subject law is interpreted as Supreme Court's rule-making power as subject to, then that would be a grave violation of independence and separation of powers doctrine, sir. Subject law means substantive law. Subject to law means substantive law as distinguished from pleading and practice. Substantive law includes much more than legislation. It includes common law. Subject to law means rule-making power as to practice must not invade the field of substantive law. So there has to be something existing. It cannot invade the field of substantive law. But it does not give them the power to legislate, sir. And, sir, with your Lordship's kind permission, I have prepared what you're saying is that the Parliament cannot make rules nor legislate regarding the rules. And all the Parliament can do is subsequent legislation नहीं हो सकती. ये जो existing law था उसके दायरे कार में रहते हुए और कानून आप rules नहीं बना सकते. दायरे कार में रहते हुए power in any event rests in the Supreme Court. Supreme Court exclusively, sir, because the word used is not just rule making; it is regulate. That we can by rule regulate the practice. Now I'll read the provision. Yes, my lord. Let's reframe the whole provision. My lord. It says, now let's read it like this. My lord. The Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court. Yes, my lord. So are you saying that Supreme Court had to be advised about the Constitution, had to be advised about the law, because it would make rules which will be completely in violation of the Constitution and the law? So it would have been much simpler drafting to start it with the Supreme Court may make rules regulating practice and procedure of the court. Your contention is
that a high body, as the constitutional body, as the Supreme Court, had to be reminded that there is a constitution in existence. Don't violate it. That's a very strange proposition. No. You are putting redundancy to the words subject to the constitution and law, because what you are saying can equally be said by deleting these words. My lord, with the utmost respect, my lord. Well, if जी, you read it जवाब in दे the way- नहीं, let's hear the council. जी, Yes. please सुन लेते हैं council को. I'm also reading it the same way. The Supreme Court may make rules and regulating the practice and procedure of the court, my lord. subject to the Constitution and the The law. law. My lord, my Which humble means, submission, which means Supreme Court can make rules. Yes. Whatever rules it wants to make. जी, But it can't go beyond the constitution or any law which already exists. So there तो is वो a मेरा सवाल limitation. अपनी जगह ठहरा, हजूर आप जवाब तो देते जी, हैं. my lord, with the utmost respect, I'm not reading it as. Utmost respect को छोड़िए, सिर्फ जवाब दे अच्छा दीजिए. सर, आपके साथ. जरा वक्त की But I'm कमी just, है. जी, I know, my lord. I'm just saying that subject to law, subject means some kind of मैं आपसे restriction. कुछ और मैंने आपसे सर, बात आपका अच्छा आप फिर redundancy. से आप देखें जो मैंने सवाल है उसका तो आप जवाब सर, नहीं मैं आ दे तो रहे. जाऊं उसमें. नहीं, आप आएंगे तो अगर दिन निकल जाएगा. मैंने कहा अगर ये हम लफ्ज काट दें सब्जेक्ट टू द जी. कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, फर्क क्या पड़ेगा फिर? जी. ये इसका सवाल का जवाब दे सर, दीजिए. फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन point is that नहीं पड़ेगा ना. नहीं, लेकिन Thank you. issue ये चलिए नेक्स्ट पॉइंट. नहीं सर, पहले अभी सुन तो ले, मैं कंप्लीट तो कर लूं सर आपकी इजाजत से. अगर फिर भी कोई लॉ आप रूल नहीं बना सकेंगे which violates any provision of the constitution. Is this something to be taught to the Supreme Court? No sir, but I'm humbly submitting subject to law does not mean the parliament can legislate. That is my humble submission. Subject to, क्योंकि जहां parliament जहां constitution power देता है parliament को बना दिया, specific words are used. चलें खैर, जी. अब पता नहीं आप redundancy I'm not assuming it is, I'm 1, just 2, saying. 3, 4, 5, 6 words of the constitution we can delete as rendered meaningless. So I'm reading it like that if I accept your contention. Subject to only means, my humble submission is that subject to only means that there's some kind of a restricting, because the constitutional power, which is a continuing power, is being given to the Only a point Supreme noted. Court. Next point. The point is that the words used in the if parliament, if constitution is giving power to the to make any law, it specifically used certain words in the constitution. If my lord kindly sees 154(5), article 154(5). Next page. My lord, until Majlis Shura Parliament makes provision by law in this behalf, the council may make its rules of procedure. These are the words. Then Article 6.3, my lord, if my lord kindly sees Article 6.3. Article 6.3 or 63? 6.3. Article 6, subclause 3. Majlis shall by law. Article 6, my lord. Yeah. जी पढ़ लिया. जी. Majlis shall by law provide punishment of persons found guilty of high treason. Then my lord will kindly see 151(2). Freedom of trade. And my lord also reads 150, subject to clause 2, trade, commerce, intercourse throughout Pakistan shall be. Majlis Shura may by law impose such restrictions. May by law. Again, sir. Then my lord, what is the point you're making? I'm making. You're just citing different provisions. My lord, if the word in the 191 was the parliament can make law, these kind of expressions as provided in the constitution would have been used, my lord. My humble submission is that when the constitution is giving the legislature a power to enact a law, then specifically words are used in the. Mr. Zubairi, there's another question. My lord. Once the rule-making power has been exercised, my lord, by the Supreme Court in terms of the Constitution, because the power vests in the Supreme Court, can subsequent legislation displace, as this act purports to do so, can subsequent legislation displace the rules that have lawfully been and constitutionally been
framed by the Supreme Court? No, my lord, that's my humble submission. They cannot, for the simple reason, because then it will become ad nauseum. For example, can now the Supreme Court, which excise can make law regulating its practice procedure, make a law overriding the parliament's making of the law? Then then the parliament will do it. Then where will we stop? So my humble submission is that could not have been the intention of the framers of the constitution, that to give power to parliament, because there are separation of power doctrines there. Once the Honorable Supreme Court has made the rules regarding regulating the practice procedure, the Parliament does not. But that practice and procedure, the rules cannot be in violation of any constitutional provision, or any law which existed, sir. So the core Substantive law. question is, where does the Constitution confer, in which institution confer the power to make rules? Ji. Whether it is the Parliament or is it the Supreme Court? Ji. If it is the Supreme Court, the only restriction is that the Supreme Court can do so within the framework of the Constitution and the existing law. My lord. And that's it. Yes, the my lord. Parliament cannot, because the power does not rest in the Constitution in the Parliament in terms of Article 199. 191, my Next point. My humble submission on this score is Next that point. that's the reason I was saying. I would really want to hear you, Mr. Zubairi. Sir, my lord is asking a question. नहीं वो आप बात तो करें फिर सवाल उठेगा Sir, यकीनन पूछ रहे हैं, इसी बात से सवाल उठा है, sir. जी. Now, if I may ask you, these words subject to the Constitution, if these words were not there at all, and the Supreme Court were to make rules, and someone were to point out, well, sir, this proposed rule X is contrary to the Constitution, the answer would presumably be, the Supreme Court would say, well, okay, yes, you're right. So we can't make rule X, right? So in that sense, saying subject to the Constitution is always redundant. Yes. Because it's always going to be there. There. Seems to me, but there's the question that perhaps there's a more subtle point here. The Constitution, of course, can also be amended. Yes? Yes, Under madam. Article. But by and large, the Constitution is regarded at any given time to be fixed, right? This is it. Underneath it, whatever happens by the judiciary, by the executive, by the legislature. So maybe the point in saying subject to the Constitution is not to make the obvious point that everything is always subject to the Constitution. Everyone knows that. But rather to fix the position of law. That when the rules are being made, what you just said, Yeah, Lord. when the rules are being made by saying subject to the Constitution and the law can only be as at that time, sir, when the rules are maybe framed. this is the point that is being made here, because Yes. otherwise I was thinking about this, and I've been thinking about this since the case started. Why say subject to the Constitution? Ji. Because everything is always subject to the Constitution. Ji. Mr. Maybe Zubairi, there's a I more just want to subtle say point. one thing. The day we hear this case, the weeks we hear this case, our institution exceeds our disposal. The day we don't, our disposal exceeds our execution. If you think this is a never-ending hearing, this is the last day of the hearing. My lord. Please remember that. You can argue till 11:30, and each one of us may have their views. Let them be expressed in judgments. I want to hear counsel. Sir, when a I mean, if question- you, My lord, please continue. We will restrain ourselves. You just continue your argument so we can be enlightened what you want to tell us, and we can record it, and we can either agree with you or disagree with you in our judgments. Sir, my lord, Up आगे बढ़िए, please. Next point. Please go on to the next. Please go on to the next point. So my point is that, again, my lord, that when the law is being given to the parliament, the ये तो आप specific repeat ना करो ना, जी, point इसमें, को। so hence subject to law, and for that I want to take you. I have placed certain case law before lordship, if my lord has that. जी, दीजिए। जी। दे दिए या देंगे? ये रखे हुए हैं सर, पहले से नहीं दिए? सर दिए हैं, बहुत पहले से दिए हुए रखे हुए हैं। आज? नहीं सर, मतलब उन्होंने कहा जब आप आर्ग्यू करेंगे उस वक्त दीजिएगा, मैं तो कब हर रोज लेके आ रहा हूँ सर। Sorry, this is most unfair. हमने कहा था लोगों को फाइल कर दें। ये केस हम हाँ, but ठीक है, you are right, we are wrong. नहीं सर, We have told everybody to file. हाँ, भी कागज के टुकड़े आ रहे हैं बीच में से। और ये कोई आसान चीज है पढ़ना? इस लॉ है सर,
इसमें तो पहले नहीं कर सकते थे फाइल। जी। इन दुनिया में ऐसे होता है या सिर्फ निजाम अदल पाकिस्तान में ऐसा चलेगा? सर, जब केस बाकी दुनिया की हम तारीख में बताते हैं। जब ये केस लॉ जरा साइड प्लीज ठहर जाइए ना जी। कि अमेरिका में क्या होता है, विलायत में होता है। आप ये करें अमेरिका अम्ब्रेला में जा करके, फिर क्या होगा आपके साथ? वहां तो आप सारे वेस्टर्न ट्रेडिशंस बताते हैं, इस्लामिक ट्रेडिशंस तो बताते नहीं है। अगर कागज के मामले में ठीक है भाई, मेरी मर्जी जब मैं करूं। सच ए सीनियर काउंसिल। My lord, may I take page 144 of this? Is a case. क्या आप हमें प्रोपोजिशन बताएं? पहले Proposition प्रोपोजिशन is बताया subject to जाता law. है। How a subject to law has to be interpreted. That is my ठीक है, बता दें जी, केस का नंबर। page. Its case is page 144 of this booklet, sir. जी। Winberry versus Salisbury. It's a case from the American jurisdiction, and they have interpreted this word. What is the meaning of? And their constitution also provided this thing. And their constitution also permits filing of documents in courts. चलिए खैर, जी। 144। Sir, this is just a ये case law सुप्रीम which I'm कोर्ट का है, citing. ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं जजमेंट? sir, it is Supreme Court of New Jersey, sir. अच्छा ठीक है। जी. My lord, page 145, if my lord kindly sees the sixth line from the top. देखिए वो जरा मुनासिब नहीं लगता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फुल बेंच में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ न्यू जर्सी का जरा ठहर तो जाइए ना। हमें हमारा लेवल इतना लो तो ना कर दें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका तो बताइए, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ न्यू जर्सी को हम फॉलो करेंगे। सर, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आप उन्होंने बता दें, जबानी बता दें, मैं आपकी बात में ज्यादा वजन है बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ न्यू जर्सी में। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का लफ्ज नहीं है, लेकिन उनके जो स्टेट्स हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के लफ्ज हैं। Kindly see, the Supreme Court shall make rules governing the administration of all courts, state, and subject to law the practice and procedure of all such courts. This is the law which they interpreted. And my lord, it says para 2 on page 145. The phrase subject to law. The phrase subject to law is not only ambiguous but elliptical. No What word is elliptical mean? Sir, मतलब कि it is confusing. बताइए। जी. You're reading a word. जी. You tell us the meaning of the word. Continuous, sir. Continuous. No word in the law has more varied meaning than the term law itself. Nor is the phrase subject to crystal clear, for the phrase implies a limitation rather than a grant of power. It is argued by plain subject law means subject to statute or legislation. It is argued. ये judgment भी नहीं है। जी आ रहा हूँ sir. If subject, अब नीचे last paragraph, sir. If the subject were to interpret it to mean subject to legislation, it would necessarily follow that once the legislature has passed a statute in conflict with the rule of court, the rule-making power of Supreme Court will become functus officio. For it would intolerable to hold, as has been suggested to us, that after the legislature have passed an act modifying a rule of court, the Supreme Court might in turn adopt a new role overriding the statute, and so on ad nauseum. And yet, if subject to law means subject to legislation, any other construction of rule-making power would be in conflict with fundamental rule of constitutional constraint that unless the context clearly requires otherwise, a constitutional grant of authority is to be interpreted as a continuing power. My lord, then the last three lines, page 146. All these page 147 पढ़ लीजिए। जी हाँ, उसमें आ रहा page 147 last two lines से पढ़ लीजिए। जी बहुत बेहतर। वही आ रहा है, नीचे आ रहा है जी। इसमें फिर सर पेज 146 पे 147 की लास्ट टू लाइन से पढ़ लीजिए ना, वो आपको थोड़ा सा उसमें जवाब मिल रहा है। जवाब आ रहा है कि मैं कुछ आपको पॉइंट करना चाह रहा हूँ कि पेज 146 के लास्ट तीन लाइंस देख लीजिए। मैं सिर्फ व्हाट पॉइंट्स है उसको आपको दिखा दूंगा सर। It is inconceivable that the people granted continuing power to the courts in all these respects or withheld it with reference to rule making, sir. Then, my lord, page 147. Last two lines. If the Raj may amend the rules, or it may decide the extent to which the law, division, charge shall exercise the powers and functions of other division. It may control the degree to which legal and equitable relief may be granted in any cause. We think it may be safely, and that no such thoughts are ever in the mind of the member of Constitutional Convention or any citizen who voted for the Constitution. Yet, if subject to law means subject to legislation, such results might inevitably follow. The courts, in some of their essential judicial operations, instead of being one of three coordinate branches of state government, would have been rendered subservient to the legislature in a fashion never contemplated by any. What then is the meaning of subject to law? The only interpretation of subject law that will not defeat the objective of the people to establish an integrated judicial system, which is independent, and which will at the same time give rational significance to phrase, is to construe it as a
as equivalent of substantive law as distinguished from pleading and practice. The distinction between substantive, which defines our rights and duties, and the law of pleading and practice, or through which such rights and duties are enforced in courts, is a fundamental one that is part of daily thinking of judges. Substantive law includes much more than legislation. It comprehends also the rights and duties which have come down to us through the common law. The phrase subject to law in Article 6 of the Constitution thus serves as a continuous reminder that rulemaking power as to practice must not invade the field of substantive law as such. While the courts necessarily make new substantive law through the decision of specific case in community, they are not to make substantive law wholesale through the exercise of rulemaking power. That is the concept. So it's subject to law does not give them a power to legislate. It is not subject to legislation. Where it is made subject to legislation, then the Constitution uses the word make such, as pointed out. ये कई articles हैं Constitution में 154, 150, then 140, Don't repeat. 240, 241 and 242 के अंदर भी यही लफ्ज हुआ है make by Mr. law. Abid, the law which is in dispute has been made pursuant to Article 175(2). Yes, I'm coming, This sir. is the power of the Sir, judicature. but I was So this in the law itself, pursuant to Article 175, Read- read with Article Article 191. 191. Article So we 191. are making much time on 191. What about Article I'm coming to that. 175 too? I'm- Because I'm no grateful to- court has jurisdiction unless conferred by the Constitution or the law. Yes, but 175(2) cannot be read in isolation. That is No, the no, judgment of it this is, court. it is the dedicated to the judicator. Sir, may I please So submit? power of the court are conferred under Article 175. Read with Article So read with, 142. that is the law that have made under pursuant to 190, read with 191. Yes, But but the the- law has been made pursuant to Article 175. My lord, उसको पढ़े ना 2 में आपके वो जी, jurisdiction, जी। किसी court का jurisdiction जो है, that is related and based इसका on मतलब the फिर premise of जी, बिल्कुल आप Article सही कह रहे हैं। 175 2. My lord, then provincial law भी आपके लिए कोई भी province है, बना सकते the हैं. courts 175, there Two. shall be a Supreme Court of Pakistan, a High जी. Court for each province. And such a and court the as High may be Court for established by Islam. law. In no court, Sub number Article 2, जी, no court shall have any jurisdiction save as is or may be conferred on it by constitution or by or under any law. That is Yes. synonymous. But humble submission is that this honorable court has interpreted when it deals with the Supreme Court, it has to be read with 2 further articles, Article 142A and entry 55. May I take your lordship to Article 142A? Yes, yes. And that is the judgment of this honorable court, sir. So this article, I don't It's understand. not a standalone article, sir. It It is? does no. With humble submission, that is No, you are now reading words into the no. I'm constitution. reading. No, where does it say it's not a standalone article? It's because the judgment of the So you Supreme can Court says imply it, but it doesn't say so. so. Sir, I'm not saying anything on my own. I based my arguments on case law and I'm cite a case law on that of this honorable court what they have said. I think I think the whole object of a full court hearing counsel is being missed. If all we are going to do is keep referring to case law, we are sitting, the full court is sitting. I don't even think you understand the gravity of it. To understand, to learn from counsel. Yeah. Refer to this judgment, refer to that judgment. By the plain words of the Constitution, you don't want to read. Then you want to read New Jersey how- Supreme Court. Let's read the plain words of the Constitution. But Let's hear counsel formulate submissions on that. My humble, Then by all means, if there is some ambiguity, we can My go humble to submission- precedent. my humble submission You see, i- the, is that the main rule for constitutional interpretation is that the entire constitution has to be Read as a whole. in a context. You cannot pick up one article and just read it in isolation because there are other articles which either may restrict or enhance that power Yes. which exists in and one how that power is to be particular exercised. My what is the law they are talking about in Article 71, 75 2? No. As article ये बार आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नहीं होता है. सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल Supreme- जजेस होते हैं. जी, सर, अंग्रेजी का तो सही इस्तेमाल कर लेना. सर, ऑनरेबल पार्लियामेंट नहीं हम कहते ये हैं. भी आप ही करते हैं.
हम यही करते हुए आ रहे हैं सर। चले आगे, चले पॉइंट जी, बताएं ना आगे। One, my Mr. Zubairi, my humble submission is that Mr. Zubairi, Article 175(2) जी ठीक, has to हमने be पॉइंट read नोट, with आपने कहा has to be read Mr. with Zubairi, Article 142A and entry 55. 142A and entry 55. 55. Let's read 142A. जी. Mr. Zubairi, the point, it seems to me over here is the question that when we are talking Article 191, we are talking of practice and procedure. Procedure, जी. Are we really talking of the jurisdiction of the court? No, We are talking of a direct grant by the Constitution regulation. of rule-making power with regard to practice and procedure. yes. So, when in this act, in the preamble, when reference is made to Article 175(2), which relates to jurisdiction, Well, Lord. is Then you go to 142A. What is, would that be correct, or would that perhaps be not entirely correct? Because here we are not talking of the jurisdiction of the court, but of its practice and procedure. बिल्कुल सर। Would अभी you- साहब इस कानून ने एक और काम भी तो किया है, इस कानून ने एक अपील का हक भी तो दिया है, तो वो प्रोसीजर में तो नहीं आ सकता है ना, तो वो सिर्फ 175 मेरे जहनियत के मुताबिक वो सिर्फ 175(2) ही में आ सकता है, उसको प्रोसीजर मैटर हम नहीं समझेंगे। वो भी तो एक जुरिडिक्शनल पॉइंट है, वो 142A और एंट्री 55 के तहत आपको पढ़ना होगा। बता दें हमें। जी, 142A देखें सर, because they are not the word 175. पढ़ लीजिए जी, 175 talks about jurisdiction. 142A sir. आप शुरू से पढ़िए 142, यहाँ भी सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। मैं आ रहा हूँ सर, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। मजलिस शूरा shall have नहीं, ऊपर ना सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जी, अब इसका बताएं, इसका क्या मतलब है? The constitution is subject to it. It cannot be any law cannot be in violation of any constitutional provision, existing provisions of the constitution, sir. Majlis Shura Parliament shall have exclusive power to make laws with respect to any matter in the federal legislative list. So this power to make law, exclusive power to make laws, as provided in federal legislative list, sir. And now entry 55. आप हम यहाँ पे इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर देख रहे हैं। आप कहते हैं कि रूल्स बनाने का इख्तियार दिया गया है और सिर्फ लॉ के तहत नहीं होगा, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ होगी। अगर आप इंटेंशन ऑफ पार्लियामेंट देखना चाहते हैं तो आप आर्टिकल 175A सब आर्टिकल 5 देख लें जी, सब 4 जी, यहाँ पे सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ नहीं है। जी सर। द कमीशन में मेक रूल्स रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर। जी, अगर इंटेंशन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का ये है कि वहां तो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ होना चाहिए, तो यहाँ क्यों नहीं दिया गया सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन? because humble submission is पढ़े that तो जरा पढ़ लें। जी, I'm reading it. 175A The commission may make rules regulating its procedure. Sir, यहाँ तो सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। सर आपने तो इससे इंटेंशन आप क्या करेंगे? फुल कोर्ट ने तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की रूल मेकिंग पर रूल की कोई प्रोविजन नहीं, उस पे भी कहा है दे कैन मेक रूल्स, द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कैन मेक रूल्स व्हिच विल हैव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। ये है जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल। मेरा सवाल शायद मैं नहीं समझा पा जी, रहा। मैं आप समझ गए, आप कह रहे हैं इसमें क्यों नहीं इस्तेमाल। इंटेंशन देखना है जी, यहाँ पे तो ये कहा है विदाउट मेंशनिंग द वर्ड सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। जी, यहाँ सिंपल कहा है द कमीशन में मेक रूल्स। जी, बट इससे तो बात समझ आती है कि आपने रूल लॉ को नहीं देखना जो एग्जिस्टिंग है या पहले से है। जी, वहां पे तभी है कि पहले इट्स अ रिस्ट्रिक्टिव वर्ड, इट्स नॉट एनेबलिंग पहले प्रोविजन। एक्ट बनता है, उसके बाद रूल बनते हैं। जी, रूल कभी एक्ट से ऊपर नहीं होते, ना एक्ट से हट कर होते हैं। कोई भी रूल अगर बनाया जाए वो एक्ट के डोमेन से या कॉन्स्टिट्यूशन के डोमेन से बाहर होंगे तो स्ट्राइक डाउन होंगे। तो यहाँ तो ये जरा बता दे कि इंटेंशन वाज़ेह नहीं है दोनों आर्टिकल्स में। सर इसमें मेरा humble submission will be that in this case sir, still no rule can be made in violation of the constitutional provision. अब आप जी सवाल का जवाब या तो सवाल नहीं समझे, मैं आपके आसान तरीके से बता देता हूँ। माय लॉर्ड पूछ रहे हैं आपसे कि जहाँ तक जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वहाँ ना सब्जेक्ट टू लॉ है ना सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका मतलब एक मतलब तो ये निकलता है कि ना कोई लॉ बन ही नहीं सकता है उसके मुतालिक, वो हमेशा कमीशन खुद ही बनाएगा अपने रूल्स। ये सिंपल रीडिंग है जी। और वहाँ 191 में सब्जेक्ट टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए लिख दिया गया कि आइन में भी हो सकता है और लॉ में भी हो सकता है। तो ये उन जमाल साहब की अंडरस्टैंडिंग गलत है तो जरा समझा दीजिए। बिल्कुल सही, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ कि जहाँ सब्जेक्ट टू यूज होता है वर्ड, वहाँ ऑलरेडी के कोई रूल इसके वायलेशन में नहीं बन सकता,
which is already existing, subject to constitution, subject to law, already substantive law exist करता है. उसमें आपकी regulation और practice and procedure पे आप no तो आप उस फिर जी, उस फिर इसमें अगर नहीं यूज किया गया तो इसका मतलब ये इसको सब्जेक्ट ताबे नहीं किया जा रहा नहीं है. ठीक है, ये आपका जी, इंटरप्रिटेशन है. इसको ताबे नहीं किया जा रहा है, but still no rule can be made ठीक ठीक, in violation नोट of the कर लिया. constitutional ठीक provision or any law. ठीक. जी, Mr. Zubairi, is My it lord. so that it is the only Supreme Court which can make rules under Article 199? High Court and Federal Shariat Court, they are having the same powers? The 202 of the Constitution gives the power to make rules to the High Court, sir. And is there any law made for those two courts? उनके अपना procedural laws हैं High Court में, and that judgment of a single bench judgment was cited by Mr. Bhandari on the last date, clearly 2021 Lahore, which deals with what is the meaning that rules can be made, but they are no, they have to be read with the rule. Anti 55 does not apply to them because that's why the rules of law reforms ordinance की बात की थी. Parliament has put a clog on the Supreme Court. Why not on High Court and the Federal Shariat Court? The High Court में है What 20 were those 202, special sir. reasons to constitute this act? Sir, 202 kindly be seen. Subject to constitution and law, a High Court may make rules regulating the practice and procedure of court or of any court subordinate to it. So 202 is 203J is the J. Federal Shariat Court. G. 203. नहीं, आप माय लॉर्ड का सवाल नहीं समझे. आपका पहले वाले सवाल का जवाब ये था क्योंकि रूल्स बन गए हैं तो अब सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ इज बीन रेंडर्ड इफेक्टिवली मीनिंगलेस. माय लॉर्ड का सवाल ये है, अगर आपकी ये बात सही है तो सुप्रीम हाई कोर्ट के कौन से रूल्स और फेडरल शरीयत कोर्ट के कौन से रूल्स बन गए थे, तो ये फिर इसका जवाब क्या होगा? ये मैं इसका जवाब आपने नहीं दिया. सर पहले मैं आपकी बात का वो जवाब देता नहीं, मैंने सवाल नहीं पूछा, मैं सर, सिर्फ आपको माय लॉर्ड का सवाल बता आपने रहा हूं. कहा कि अब नहीं, मैं अभी भी कहता हूं आज आप रूल्स बनाने जाएं, they cannot be in violation of the constitution, subject they have to be subject to any substantive I law. can only use one word for it, profound. जी, but still आपने ये कहा कि मैं कह रहा हूं कि जी अब नहीं हो सकता. My lord, rule making power is a continuous power. ये समझ गए ना, मगर माय जी। लॉर्ड का जवाब नहीं दिया आपने जी सवाल मैं का. दे रहा हूं उस पे सर. इसके अंदर भी जो लॉ उन्होंने बनाया है, that has to be subject to constitution and the law, and that is the interpretation given in the judgment of. इसके लिए तो कोई And you see, legislation नहीं हुई। the Lahore High Court in a full bench judgment, जब ये क्वेश्चन अराइज हुआ था कि गवर्नमेंट ने भी लेजिस्लेशन कर दी थी और हाई कोर्ट ने रूल्स भी बना दिए थे, the High Court said you cannot do that. Do that, जी. Once the power vests in the High Court, the government or the legislature cannot legislate in matters relating to rules because the rule-making power exclusively vests in the High Court. जी. So this is it's a judgment जिस पे आई PLD 2021 Lahore page 544 and relevant portion is para 61 page 580 onwards, sir. पढ़िए जी. पढ़िए PLD एक दोबारा साइटेशन बताइए. PLD 2021 Lahore page 544. My lord, para 61. आपकी बुक में कौन सा हिस्सा है? Page 580, page 561. आपकी बुकलेट में कौन सा है? जी. बुकलेट में नहीं है सर. मेरे नोट्स भी हैं, मैंने अपनी CMA भी दाखिल की हुई है, पर क्योंकि माय लॉर्ड ने पूछा तो इसलिए मैं निकाल के लाया हूं. पैरा 61 और बात 202 पहले कोट करते हैं और फिर मैं आई रीड दिस पैराग्राफ सर. ये पेज 544 आप कह रहे हैं? 580 sir. It starts at page 544 and relevant portion which my lord's observation is at page 580. सिंगल बेंच का जजमेंट है. जी. Why you are citing it before full bench? तो इसमें इंटरप्रेट हुआ है हाई कोर्ट की पावर्स के ऊपर जो 202 की पावर्स है. होगी जी. सिंगल बेंच का जजमेंट फुल कोर्ट को साइड पड़ता है क्यों नहीं पड़ता? इसमें एक लॉ बना दिया था, अमेंडमेंट लॉ और रूल्स में अमेंडमेंट कर दी थी. दैट वाज चैलेंज एंड दैट वाज सेट असाइड. काइंडली may I read with lordship's kind permission? You want to? G. Thus, the High Court have been conferred the constitutional power regarding rules and procedure, which may not only regulate the practice and procedure of a High Court, but also any court subordinate to it. In exercise of this power, HC has made rules entitled High Court Rules and Orders, which contains elaborate procedure to be followed by the court subordinate to it in matters relating to adjudication of cases before civil court. Thus, not only has the High Court been delegated the power of making and amending rules in the first schedule by the court itself, but also by the Constitution by virtue of Article 202. The central
question regarding power of High Court has escaped the attention of Government of Punjab while promulgating the amendment ordinance, which impinges upon the powers of Lahore High Court to enact and amend the rules. This proposition being stated for a simple reason that the amendments to by amendment ordinance are made part of the substantive body of the court, not in the rules comprised of first schedule. Also, almost all of them relate to details of procedure to be followed by civil courts in adjudication of cases, which as numbered has traditionally been part of first schedule. A grossly egregious and anomalous situation has now been created, which pits and the procedure introduced by amendment against the amendments made by Lahore High Court, which now run a parallel course. There are serious contradictions between the two processes, which is most cases are irreconciled. Although, I'm reading from the last line, although in such matters considered as is not normally assigned, but in peculiar case where across the board amendments, the rules have been made by committee of the High Court only a few months, Government of Punjab is obligated to have consulted LC for purpose of reconciliation. Also, while a reference to Article 202 of the Constitution has already been made, also by implication follows that exercise of rulemaking powers is constitutional, which resides in the High Court. Therefore, if such power has already been exercised, emerges as an unwritten rule to be followed in all such matters that is of utmost importance concern be held and the government of province. It is not only essential, but also to preserve the independence of that is unique situation where judicial legislation is present. So this is the thing, once the constitutional power has been exercised by the court, because these rules made by this court have constitutional backing, this is what the judgments have said, it has constitutional backing. Even the rules under the Supreme Judicial Council, PLD 2021 Supreme Court page 1, page 94 says that though Supreme Judicial Council does not, the law does not allows them to make rules, but they made the rules, Supreme Judicial Council, and those rules have constitutional status. So take a look at Article 203E Ji. in relation to the Federal Sharia Court. Ji. Take a look at Clause 2. 203 capital E, Clause 2. My lord. Yes, my lord. The court shall have power to conduct its proceeding and regulates its procedure in all respect as it deems fit. This doesn't seem to be regulated by law. No, it doesn't, sir. So therefore, does this mean that the rule-making power of the Federal Sharia Court is on a higher pedestal as compared to the Supreme Court or the High Court? No, my humble submission, be. both are constitutional powers, sir. So Both the Supreme Court, the High Court have been granted. I'm just coming off from what my learned colleague was asking you about the rule-making power of Federal Sharia Court. If read literally, this would mean that the Federal Sharia Court is put on a pedestal much higher than even the Supreme Court, to which appeals lie from the Federal Sharia Court. So then there are judgments of this honorable court that if there's a conflict between a substantive provision and provision of the Federal Sharia Code, then those substantive provisions will prevail, sir. So that is also a judgment of this honorable court on this field. That constitutional provision will be higher pedestal than the provisions under the Federal Sharia Code chapter, sir. Thank you. Yes, my lord. So my lord, humble submission is that I was coming to that that the jurisdiction aspect, sir. Jurisdiction aspect is that yes, Article 175 gives the Parliament the jurisdiction to make law, but that law has to be read with Article 142A, which I read to your lordship, sir, and Entry 55, sir. Does 191 confer jurisdiction or does it confer power? I'd say it confers power, sir, because it says regulated. The word used, most important word is that the rule make it regulate the procedure, the practice and procedure. What is the meaning of regulate? 91 is not a jurisdiction conferring article. It is conferring power. Conferring article. And there is a distinction between jurisdiction and power. And that has been very elaborately dealt with by this honorable court in Ziaur Rahman's case, sir. PLD 1973 Supreme Court, page 49, and the relevant portion is, what is the difference between judicial power and jurisdiction, sir? PLD 73 3 Supreme Court, page 49, sir. And I'll give you lordship the citation.
relevant page कौन सा आप sir? Sir, sorry, मेरी किताब जरा नहीं मिल रही, लेकिन 73 Supreme Court page 49 there's a great delay, but just हम पढ़ लेंगे बाद जी, में, अगर आपको जी, नहीं मैं मिल अभी रहा कोई निकाल बात देता नहीं, हूँ। आगे जी, बढ़ते हैं. my lord, and the relevant portion, my lord, will find at page 69, sir. It starts, it refers to from 68 the case of Fazlul Qadir Chaudhary, sir. First paragraph. Para 69, sir. And it says this the whole page. Para 69. Page 69, my lord. जी. जी. कहाँ से पढ़ें? जी. कौन सा पैराग्राफ? जी, para D, parenthesis D, paragraph से, what the Honorable Supreme Court was saying regarding. So far, therefore, as this court is concerned, it has never claimed to be above the Constitution, not to have the right to strike down any provision of the Constitution. It has accepted the position that is a creature of the Constitution, that it derives its power and jurisdiction from the Constitution, and that it will even confine itself within the limits set by the Constitution, which has taken oath to protect and preserve. But it does not claim that, and has always claimed that it has the right to interpret the Constitution and to say to what a particular provision of the Constitution means or does not mean, even if that particular provision is a provision seeking to oust the jurisdiction of this court. This is the right which it acquires, not dehost the Constitution by virtue of the fact it is a superior court set up by the Constitution itself. It is not necessary for this purpose to invoke any divine or supernatural right, but this judicial power is inherent in the court itself. It flows from the fact that it is a constitutional court and can only be taken away by abolishing the court itself. In saying this, however, I should make it clear that I am making a distinction between judicial power and jurisdiction. In a system where there is trichotomy of sovereign powers, then ex necessity derive from the very nature of things, the judicial power must be vested in the judiciary. But what is this judicial power? Judicial power has been defined in corpus juris secundum. The judiciary or judicial department is an independent and equal coordinate branch of government, and it is that branch thereof which is intended to interpret, construe, and apply the law, or the department of government which is charged with the declaration of what the law is, and its construction so far as it is written law. This power, it is said, is inherent in the judiciary by reason of the system of division of powers itself, under which, as Chief Justice Marshall put it, the legislature makes the executive execute and judiciary construes the law. Thus, the determination of what the existing law is in relation to something already done or happened is the function of judiciary, while the predetermination of what the law shall be for the regulation of all future cases falling under its provision is the function of legislature. It may well be then asked at this stage as to what is meant by jurisdiction. How does it differ from judicial power? Apart from setting up the organs of the constitution, may well provide for a great many things, such as the subjects in respect of which that power may be exercised and the manner of the exercise of that power. Thus, it may provide that the courts set up will exercise divisional or appellate powers or only act as a court of secession or only decide constitutional issues. It may demarcate the territories in which a particular court shall function over which its writs shall run. It may specify the person in respect of whom the judicial power to hear and determine will be exercisable. These are all the matters which are commonly comprised in what is called the jurisdiction of the court. It expresses the concept of the particular rest or subject matter over which the judicial power is to be exercised and the manner of its exercise. Jurisdiction is therefore right to adjudicate concerning a particular subject matter in a given case, as also the authority to exercise in a particular manner the judicial power vested in the court. In exercising this power, judiciary claims no supremacy over other organs of the government, acts only as the administrator of the public will. Even when it declares a legislative measure unconstitutional void, it does not do so because the judicial power is superior in degree or dignity to the legislative power, but because the Constitution has vested it with the power to declare what the law is in the cases which come before it. It thus merely enforces the Constitution as a paramount law whenever a legislative enactment comes into conflict with it, because it is a duty to see that the Constitution prevails. It is only when the legislature fails to keep within its own constitutional limits the judiciary steps in to enforce compliance with the Constitution. This is no doubt a delicate task, as pointed out in the case of Fazl Qadir Chaudhary versus Shah Nawaz, which has to be performed with great circumspection, but it has nevertheless to be performed as sacred constitutional duty when other state functions disregard the limitation imposed upon them or claim to exercise power which the people have been careful to withhold from them, sir. So this is the difference between jurisdiction and judicial power. The power exercised under 191 is a constitutional power vesting in this court to regulate
the practice and procedure of the court. And Parliament cannot interfere in that because that's exclusively given. If it was, then it would have said until the Parliament makes the law, the Supreme Court can make the rules of procedure, etc. These kind of words were not used. Where the Constitution specifically uses these words, then the law is being given. But it says subject to, that is implying there's not enabling provision, it's a restrictive provision. This is my humble submission. As my Lord, Anything else? Ji. Mr. Zubairi, the similar principle was reiterated in Sharif Afridi's case. Ji. That was regarding independence of judiciary, and that was separation of judiciary, PLD 94, Supreme Court, page 105. Added note by Salim Akhtar. Ji, sir. Ji. And it was coming from a larger bench of the Sindh High Court, 89 Karachi, page 404. The judgment was upheld, authored by my Lord Ajmal Miazi then was, sir. My Lord. Yeah, I think if you argue in context of Pakistan and what's happening and why presumably the legislator enacted this law. I understand, sir. No, you're not. Now let me pose a certain queries to you. This, they are giving a right of appeal. Now we're talking about the right of appeal under 184(3). My Lord. Correct? Yes, my Lord. अब 184 में जो हक दिया गया है अपील का, आपने बिल्कुल ये बात नहीं करेंगे कि 184 कैसे इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, या तो कहिए बिल्कुल सही इस्तेमाल हो रहा है, या कहिए बिल्कुल गलत हो रहा है, या कहिए कभी सही हो रहा है कभी गलत हो रहा है। कुछ तो बयान कीजिए ना, क्योंकि आप हमारे सामने पिटिशन नहीं लाए। मुझे समझ नहीं आ रहा है आपकी एंजाइटी क्या है इस लॉ से। वजाहत से बात कर दें तो हम समझ जाएंगे। अब सवाल अभी तक आया नहीं है। 184(3) जो है ना, का इस्तेमाल कैसे हुआ है पाकिस्तान में, हकीकत क्या है? ह्यूमन राइट्स सेल, कोई रूल में उसका तस्करा है, बताइए है। किसी कानून में उसका तस्करा है, बताइए है। अभी तो हम चलें पार्लियामान को तो छोड़ दें, हमारे अपने रूल्स में उसका तस्करा है। अब 184(3) जहां तक हेबस कॉर्पस की बात है, उसका तो रूल में तस्करा है, मगर जो दूसरे इख्तियारात इस्तेमाल किए गए हैं 184(3) के तहत, उनका रूलों में तस्करा था नहीं था, कैसे इस्तेमाल किया गया। और अगर आप कहते हैं कि रूल की भी जरूरत नहीं उधर, अब तो हम रूल से भी चले गए ना। 191 ये तो नहीं देता है इजाजत के चीफ जस्टिस बना सकता है रूल, या ह्यूमन राइट्स सेल बना सकता है, या तो क्या ये है? तो वहां तो आप अपनी आंखें बंद कर रहे हैं। उसमें चले, यहाँ तक बात मान लेते हैं कि अगर 184(3) में ह्यूमन राइट्स सेल बन गई होती, फिर आपकी बात में वजन होता कि भाई शीरी के 184(3) में ह्यूमन राइट्स सेल बन गई है तो उसके तहत कर लिया है, सही क्या गलत क्या तो बात की बात है। तो वो बातों को तो आप बिल्कुल नजरअंदाज करना चाहते हैं कि 184(3) में। अब देखिए, इससे पहले कि दुनिया हम पे उंगली उठाए, मैं अपने ऊपर उंगली रखता हूं कि 184(3) का इख्तियार जो इस्तेमाल किया गया है, और हजारों केसेस में कुछ केसेस की नौयत थी कि बिल्कुल वो एक जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के आप मैटर में आप ला सकते हैं उनको, कुछ थे बिल्कुल पर्सनल हो गए थे केसेस। ठीक है, पहले आप हमें उस पर तो कोई तशरीह कर ही नहीं रहे हैं, आप बता ही नहीं रहे कि कौन से रूल्स के तहत कर रहे थे। अब आप कह रहे हैं चले खैर, सुप्रीम कोर्ट ने गलत नहीं, सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस ने अगर गलत किया तो पार्लियामेंट को तो ये गलती नहीं करना चाहिए। तो कम से कम वहां ज्यादा वजन नहीं होगा कि वो तो कम से कम कानून के मुताबिक एक चीज करना चाह रहे हैं। यहाँ ये 184(3) का इख्तियार कैसे इस्तेमाल हुआ, ये हकीकत है पाकिस्तान की। आप न्यू जर्सी ना जाइए, आप पाकिस्तान में रहिए और यहीं की बातें थोड़ी हम लोग कर लें। कैसे इख्तियार हुआ बता दें, ये आप बिल्कुल तरीकेकार सही था, फिर बात सही है। अगर आप कहते हैं नहीं था तो फिर आप उसकी रेमेडी, अगर एक गलती होगी फिर उसकी रेमेडी तलाश करना किसकी जिम्मेदारी है? सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस अदालत की है, इसके बाद शायद पार्लियामेंट की पड़ती है। अगर हमने गलती की, हमें दुरुस्त करना चाहिए। अगर पार्लियामेंट ने गलती की है तो पार्लियामेंट को दुरुस्त करना चाहिए। अगर हम अपनी गलती नहीं दुरुस्त करते हैं तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है? नहीं। आप बस सिर्फ उस बात पे खड़े हुए हैं, मगर जितनी वो जो पाकिस्तान में जो कुछ हुआ उसको वो नजरअंदाज करें। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट प्राइस शुगर का तयन कर ले या कोई और बातों का कर ले, फिर वहां तो रूल्स बना लेते। एक ऑर्डर था मेरा कि भाई चलें रूल्स बना ले, फिर इसको हम कर लेते हैं। तो वहां तो आप जा ही नहीं रहे हैं। तो आपका जो कंडक्ट आ जाता है क्वेश्चन में कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या पीटीआई को नहीं कर रहे हैं। नो सर, आप किसको कर रहे हैं? ऑन नोटिस एज प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट को कर रहे हैं। अरे तो आपने वजाहत दी कि आप किसके लिए अपीयर हो रहे हैं। चलिए खैर ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का हमें बताएं ना मौकिफ क्या। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मौकिफ क्या है? 184(3) जैसे इस्तेमाल हो रहा था सही हो रहा था, तो फिर बता दीजिए ना। अगर हम इस कानून को
खत्म कर देते हैं, कल हो रहा था वो सही होगा, इसका जवाब दे दीजिएगा। सब बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफिक हूँ इस बात में। मैंने कोई ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया, मैं आपका मौके जी, मैं समझना चाह रहा हूँ। आप मेरे मुंह में ना कही कि मेरा मौक़िफ़ है ये। सर, आपका मौक़िफ़ हम सुन चुके हैं कि आपने नहीं, क्या मेरा कहा। मौक़िफ़ नहीं है आपने ये। कहा कि जी आप अपने पावर्स गिव अप करना चाहते हैं, आपने कहा नहीं, सर। नहीं, ये वो जी, अलग बात है, जी। ये अभी बात हो रही है 184(3) की। जी। प्रोसीजर वाली बात अलग है, वहाँ पावर की तो बात पहले मैं आती है। पूछा, अभी तो यहाँ पे 184 पे तो आया ही नहीं था। मैं अभी आप आपने 175 की जो बात हो रही है, सर तो उस पे आ रहा तो 184(3) मैं तो फिर आप सवाल हो गए तो मुझे आने तो दें, 184 पे उस पे भैया आप कब आऊँगा। आएँगे? 10:30 बज गए हैं। सर आपने जी, 11:30 तक कहा था, लेकिन उससे पहले मैं इंशाल्लाह खत्म कर लूँगा। लेकिन आपको नहीं 11:30 कहा था, सबको कहा था। अच्छा, सर मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि 184(3) पे तो भी आया नहीं था, लेकिन बिल्कुल यहाँ पे आपसे मुत्तफ़िक हूँ इस बात से कि 184(3) का गलत इस्तेमाल भी हुआ है। उस पे बहुत चीज़ें जिस पे बहुत सवालात उठे। लेकिन पॉइंट इज़ दैट बात मैं जो आर्ग्यू कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के आप एक फ़लसफ़ाई बात कर रहे नहीं हैं, सर, आपने हकीकत पूछा में वो नहीं आपने है। पहले मुझसे पूछा कि सही इस्तेमाल हुआ नहीं गलत, तो मैं उसका जवाब तो नहीं, नहीं दूँगा तो ना फिर सर। उसका हल भी बता जी, देना। हल आ रहा हूँ ना सर, हाँ, पहले मैं आपसे वो बात बता रहा हूँ जो जी। आपने मुझसे सवाल किया, उस पे हल की तरफ आ रहा हूँ। मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ कि सर इसका सही इस्तेमाल हुआ, गलत इस्तेमाल हुआ। देखना आपको ये है कि कॉम्पिटेंस किसकी है इसको सही करने की, जुरिसडिक्शन किसकी है। नहीं, नहीं, या मैं आप अगर देखिए अपनी ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने अब अपनी ज़िम्मेदारी एकदम हम पे डाल दी। नहीं, मैं आपकी राय मैं पूछ अभी रहा हूँ तो आपने कहा देखना आपको है, आपकी कोई राय है, आप जी, मैं आ रहा पाकिस्तान की हूँ सबसे बड़ी बॉडी हैं सर, मैं आ रहा हूँ वकीलों उस की, पे। तो बताइए ना, आप अपनी राय ज़ुबैरी साहब, बताइए। जी, आबिद ज़ुबैरी साहब, जी जी, सर। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है एग्जिस्टिंग, उसके तहत से 184(3) को ले, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, इट हैज द इफेक्ट ऑफ वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स, क्या पार्लियामेंट जिसके पास वैसे इख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को इनलार्ज भी कर सकती है और सप्लीमेंटल पावर्स भी कन्फर कर सकती है, क्या वो फंडामेंटल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में, एक्सेस टू जस्टिस के कॉन्टेक्स्ट में, इज इट bereft ऑफ jurisdiction? अगर सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स के तहत उसका इफेक्ट ये हो कि फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, सब एक्सेस टू बिल्कुल जस्टिस सही, बिल्कुल सही। सर डिनाई हो प्रैक्टिस रहा है। मैं 184(3) की And I had said this in the first hearing. It is not a question of good, bad, it or is the for ugly. competence, sir. It is the question of Competence. competence. Who is there to correct it or who has to be here to make the law? A law Ji. may be a very good law, Yes. but if somebody who is not competent to make it, जी, it is in conflict with the constitutional powers, the trichotomy of powers है. आप हमें ये competence पे बताइए कि ये मैंने- किसकी जी, competence? नहीं, मैंने- वो तो बात हम समझ गए मैंने आपकी, मेरा- आपका मौक़िफ़ ये है, वो तो बात समझ गए, मगर मेरा सवाल इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको नज़रअंदाज कर सर, लें मैं आ सिर्फ रहा हूँ, सर। कॉम्पिटेंस पे, जी। तो वो आप बता दीजिए, उस पे जी, तो मैं आपको अब- आप हम अब- सुनना चाहते हैं आपकी जी, राय। अपील के ऊपर आ रहा हूँ, लेकिन पहले मैं जज साहब का सवाल दे दूं। मैं अतर मिनल्ला साहब ने जो पूछा, माय लॉर्ड, माय आंसर इज दैट इट्स नॉट अ मैटर ऑफ good or bad or gulti. It is a matter of competence. Whether my lord has to see this court has to see whether they had the competence to even correct that thing by making this law. Then you have not crossed the first hurdle. There's a presumption of constitutionality. जी, आपने एक लॉ चैलेंज किया है, जी, उसके रिपटल के लिए आपने ना स्टैंडिंग बताया है, ना 184(3) के तहत सर मैं अभी तक ये बता सकते हैं आप कौन सा फंडामेंटल राइट इन्फोर्स कर रहे हैं, आप उस मेंटेनेबिलिटी को भी नहीं क्रॉस सर किया। मैं Now humbly हम submit एक एब्स्ट्रैक्ट में जी वी आर सर 191 के arguing पहले something. जी, देखें आपसे constitution मैंने आपकी सिंपल एक सवाल ये पूछा है, jurisdiction of this court is not नहीं, just आपसे enforced सिंपल मैंने एक सवाल पूछा है, जी एक्सेस टू जस्टिस जो जी। है वो डिनाई हो रहा हो, ये सुप्रीम कोर्ट डिनाई कर रही हो, जी फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर रही हो, कैन द पार्लियामेंट नॉट legislate? My humble submission, no, they cannot. If if the court is violating any of the rules or the constitution, then case should be brought before the honorable before the Supreme Court to challenge that thing. That is the way to challenge the law. Any rule made by the Supreme Court, मुझे ये Parliament बताइए, cannot make. मुझे ये पहले बताइए, आप अब मेरे सवाल का भी थोड़ा जवाब दे मुझे दीजिए। ये बताइए आबिद साहब जी, the Chief Justice exercised his powers under before this law by fixing these petitions. Why not more important petitions like enforced disappearances, other human rights issues? Now,
That is a question which the parliament wanted to address. Why should these cases have been taken first? Why not other most important cases? My humble submission is practice and procedure, that only the power to regulate the practice and procedure rule-making power vests in the court. It does not vest in the parliament to make the practice and procedure, even if there was something. ये बात आप कर चुके हैं, नई बात कर देना, सवाल जवाब देना. And the law can be challenged on two grounds: that violates fundamental rights or is in violation of some constitutional provision. That is the jurisdiction of this honorable court, not just the violation of the fundamental right, but if the law itself is in violation of some constitutional provision, that can be struck down by this court. So that is the jurisdiction of this court. That is under अब आप Article बताएंगे मेरे 199 सवाल, or अब आप 184? आबिद साहब, अब मेरी बात की, High Court has also jurisdiction under 199. तो मैं लिखूं, मैं अपना लिख देता हूं. It was put to him and he's not answering Sir, it. I'm coming, but my lords, आप पहले वन बाय वन कर दीजिए. अच्छा, बहुत बेहतर सर. जी. अच्छा, 184(3) पढ़ें सर पहले नहीं, please. मुझे मैंने जो बात की वो पढ़ तो 100 दफा लिया है. मैंने जो आपको बातें बताई उसका सर, मैं जवाब, कहता हूं, आपकी राय क्या है? मेरी राय ये है कि जी अपील का हमारी स्टैंड भी है कि अपील का राइट होना चाहिए, but it has to be given through a मैं constitutional ये बात amendment. नहीं की थी. मैंने कहा जितना इस्तेमाल हुआ सब सही हुआ. मैंने जवाब दिया, आपने कहा मैं आपसे पूछ रहा हूँ. मैं कहता हूं नहीं, अगर नहीं भी हुआ है सही सर, अगर पूछ रहा हूँ, आपकी कोई राय नहीं है. मैं कहता हूं प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट सही भी हुआ है, गलत भी हुआ है, नहीं नहीं दैट्स नहीं, भी अपील होनी चाहिए. मैं कहता हूं आप ये मैं पूछ रहा हूँ आपकी राय में, इन योर पर्सनल ओपिनियन, अगर मगर ना करें, सीधी बात करें ना. आप क्या हुआ है, सारे सही हुआ. सर मैं कह रहा हूँ कि दोनों अच्छा भी हुआ है, गलत भी हुआ है. जी मेरा ये स्टैंड है. और ये मैं आपसे ये आपके सवाल का जवाब. ठीक है. अच्छा, अब आप दूसरा सवाल सुन लीजिए. जी. आपका ये कहना है कि तरीकेकार गलत है, यही आपका आर्गुमेंट है ना? ये राइट देना चाहिए मगर आइन को तरमीम लाने की, ये आपका बिल्कुल मौकिफ है. जी. अच्छा, अब सुनिए, क्योंकि जुरिस्डिक्शन ना हम बढ़ा सकते हैं और ना पार्लियामान बढ़ा सकती है. हम ये केस सुन कैसे रहे हैं फिर? जी. हम 184(3) में सुन रहे हैं ना ये केस. जी. हमने जुरिस्डिक्शन बढ़ा दी जी. या क्या ये नहीं बढ़ाई? ये जुरिस्डिक्शन कर्टेल्ड है 184(3) में. दो बातें, पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट. अब कौन सी फंडामेंटल राइट इन्फोर्स कर रहे हैं? आप कह रहे हैं यहाँ बढ़ा दीजिए मगर वहां ना बढ़ाइए, तो यहाँ ये हम केस सुनने से ही अपनी जुरिस्डिक्शन बढ़ा रहे हैं. सर आपने ये आपका मौकिफ होगा? आपकी सारी जजमेंट्स जो है 184(3) मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं. जजमेंट का ना सवाल है. 184(3) के अंदर फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन भी सुप्रीम कोर्ट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, और अगर कोई कानून मुकन्नना बनाती है तो उसके ऊपर डिक्लेयर करना कि वो कानून आइन के मुतसादिम है, वो भी आपका हक है अंडर 184(3). अच्छा, जब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस में जब भी कोई अमेंडमेंट आ जाए तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में 184(3) के तहत हो सकता है. आपका कहना ये? बिल्कुल हो सकता है. इफ माय लॉर्ड, ठीक है, ये मैंने नोट कर लिया. बिल्कुल करें सर. इवन इफ इट्स नो फंडामेंटल राइट इज इन्वॉल्वड. नहीं, फंडामेंटल राइट्स हो सकता है, लेकिन टैक्सेशन मैटर में वन फंडामेंटल राइट होती है. अमेंडमेंट भी चैलेंज हो सकती है, वहां भी हो सकता है, लेकिन पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू आता है सर. व्हाट इज द मैटर? देखिए दो कंडीशंस होती है ना सर, पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड फंडामेंटल राइट्स. इट्स नॉट आइदर और, इट इज बोथ साइमल्टेनियसली. वही मैं कह रहा हूं कि आप दोनों चीजों को देखना होगा, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को नहीं देखना होगा आपको. तो ये केस में क्या फंडामेंटल राइट है बताइए ना हमें. इसमें फंडामेंटल राइट एक्सेस टू जस्टिस का माय लॉर्ड वाज सेइंग कि कौन सा आर्टिकल बता दें, वो वाला आर्टिकल 9 सर. आर्टिकल राइट टू लाइफ. राइट टू लाइफ में होल्ड किया गया है कि जी होल्ड नहीं किया गया, उसके लफ्ज में बता दें कौन से में आता है, तो मैं लिख लूं. जी. Access to justice and ये independence of judiciary is being held to be incorporated in the words of Article 9. से तो आप कह रहे हैं literal reading में तो नहीं है, interpretation. अच्छा, लिटरल में नहीं है ना, तो ये तस्लीम आप करते हैं. लिटरल में नहीं है, implied reading में है. नहीं, judgments of the honorable which is binding on us is says कि जी access to justice in high court. Binding, it may be binding on you, not on us. Sir, in high court bar का जो फैसला है 2009 सुप्रीम कोर्ट 879, इट इज अ फुल कोर्ट फैसला, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जी आर्टिकल 9 की वायलेशन में एक्सेस टू जस्टिस इंडिपेंडेंस. चलिए ठीक है, मेरा सवाल का जवाब मिल गया. आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़े. हां, मेरे साहब ये बता दें कि आप करें एक्सेस टू जस्टिस की बात है, सिटीजन एट लार्ज की बात है, इस एक्ट के तहत वो कौन सी कोई ऐसी प्रोविजन इस एक्ट में है जो पब्लिक को डिबार करती है टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट? ऐसे कोई प्रोविजन है जो कह सके कि इसमें जो बात है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, वी हैव अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. इफ दिस लॉ, इसमें अच्छा लॉ होगा, बहुत अच्छा लॉ होगा, लेकिन इशू ये है कि इट इज द कॉम्पिटेंस. अगर कॉम्पिटेंस नहीं थी देन इट्स नॉट अ राइट लॉ, इट इज अल्ट्रा वायरस. मेंटेनेबिलिटी की बात कर रहा हूं. इस एक्ट को देखने के लिए हमने ये देखना है कि आया इसकी कोई प्रोविजन या टोटल एक्ट किसी भी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है
या इसके जरिए कोई पब्लिक या किसी सिटीजन का हक मारा जा रहा है कि उसे पहले तो अपील की हक थी अब नहीं दिया जा रहा है, पहले ट्रायल की हक थी अब नहीं दिया जा रहा है, ऐसी कोई प्रोविजन इसमें है कि हम कह सके कि ये इलीगल? सर मैं कह रहा हूँ इसकी प्रोविजन आपको ये देखनी है कि क्या ये कानून साजी हो सकती है। जवाब दें उसके बाद मैं आ रहा हूँ सर, मैं आपको जवाब ही दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इसमें ये देखना होगा कि क्या कानून साजी का इख्तियार था पार्लियामेंट के पास टू मेक दिस लॉ। चलिए इसमें बताता, आपने पहले कहा कि 1980 में रूल्स बने जी, वो रूल एग्जिस्टिंग लॉ के तहत बने जी, ये तो आप मानते हैं कि रूल लॉ के तहत बनने चाहिए जी, तो क्या आप रूल बने 191 के तहत सर, 191 आर्टिकल रूल लॉ के तहत। आपने थोड़ी देर पहले जो आर्गुमेंट से आपने कहा कि एग्जिस्टिंग लॉज के मुताबिक 1980 में रूल जी बिल्कुल एग्जिस्टिंग आप प्लीज मुझे ये बता दें, मेरी नजर से नहीं गुजरे 1980 में उस वक्त कोई ऐसा कानून था जो सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस प्रोसीजर को नहीं फॉलो कर बिल्कुल नहीं तो था। ये रूल कैसे बने अंडर 191 56 के बने पहले बने 1956 में। लॉ कहाँ गया सर लॉ अगर कोई लॉ है वर्ड यूजेस सब्जेक्ट टू लॉ, सब्जेक्ट टू लॉ मींस कि कोई लॉ अगर होता कोई भी लॉ इट कैन बी एनी लॉ सब्सटेंटिव लॉ। आई थिंक वो 191 वाला आर्ग्यू आप कर चुके थे जब आप 175 पे सब्सटेंटिव थे। लॉ कोई था जिसके वायलेशन में नहीं बन सकते थे, ये मेरे हम्बल सबमिशन थी सर। ठीक ठीक तो ये लॉ प्रोसीजर पे लॉ नहीं अगला था। पॉइंट बताएं अगर कोई होता if I may ask you a question. The equivalent to Article 184(3) of our Constitution, I think, is Article 32 of the Indian जी Constitution, मालूम which guarantees the right to move the Supreme Court for violation of fundamental rights. If memory serves me right, Mr. Ambedkar, who is regarded as the father of the Indian Constitution, in relation to this jurisdiction conferred on the Supreme Court, said it is the very soul of the Constitution. जी Now, if that is correct, and in India no one has ever doubted that that is correct, we are here talking of the very soul of the Constitution. yes and It seems to me that, and this is my question to you, that can a challenge to a law which, according to you, whether right or wrong, that has to yet to be decided, that is an assault on the independence of the judiciary. Is that not an assault on the very soul of the Constitution? of course because Can it be therefore put to one side simply by saying that it is not in violation of fundamental rights? no, because This my is humble the- submission is that this is what my humble submission is, that the very purpose this law, and I read that judgments, that it affects the separation of power, the doctrine of separation of power. My lord, this court has the exclusive jurisdiction to चलिए ये पॉइंट yeah, आप रिपीट करते yeah. रह रहे हैं। अगला and पॉइंट that's why बताइए। if any law which is made in violation of that cannot be, that affects the even the Okay, let's fundamental get on, rights of the get people of on with it, Pakistan, Mr. access to Zubairi. justice. Next point जब पे आते हैं। 184 की जो power, that's the original power of this court. There's appellate power is 185, sir. Advisory power is 186. Review power is 188. These are the four powers which are given by the Constitution. No, you are wrong. The other parts also. I'm talking about these are the appellate when की बात कर रहा हूँ, चार powers की जो दी हुई है. Now, the original framing में appeal का right नहीं था. Appeal is only provided under Article 185. Now, if you want to give an appeal, my humble submission is that you have to amend the Constitution. And why? Because section आप पढ़ेंगे sir. Article 175, 142 देखा, अब entry 55 देखने sir. What does entry 55? पढ़ें। जी. My lord, 175(2), Article 142A and entry 55 have to be read together, not in. पढ़ने 55 से कहाँ से शुरू करना चाहते हैं? Jurisdiction powers all courts except the Supreme Court with respect to any of the matters list and to such. Now, I'm coming to emphasize this last part, sir. The second part of this entry. And to such extent as is expressly authorized by or under the Constitution. Now, these are very important words. And my lord, I'll keep that my lord's thing. And by or under the Constitution, the enlargement of the jurisdiction Supreme Court and conferring thereon of supplementary powers. The point is that the thing, पिछले जो आपके जो लिस्ट थी उसके अंदर ये वर्ड्स नहीं थे. In the 56 Constitution, 62 and 72, expressly authorized by. The argument is that when you read all these three provisions together, no court shall have jurisdiction except provided by Constitution or law. The 142, Parliament can make laws in regard for. यहाँ increase की जो बात हो रही है, उस पे मैं सिर्फ एक पैराग्राफ जजमेंट. इसके power increase हो रहे हैं. On the Supreme Court की power. यहाँ आप इसमें आप कह रहे हैं ये independence judiciary खत्म हो रही है क्योंकि power increase हो रहे हैं.
Sir, it is the method, the methodology. फिर वो which is मेथड taken. वाला आर्गुमेंट खत्म हो नहीं गया सर, ना, इसमें यही है अब आप दूसरा आर्गुमेंट दे आपकी रहे हैं। ओरिजिनल jurisdiction के अंदर अपील नहीं प्रोवाइडेड थी in the original framers of the constitution. They did not provide. Only the appeal was. भाई in the मगर मैं फिर article. उसका काउंटर आर्गुमेंट जी, ये सर, भी मैं- दे सकता हूँ कि 184(3) का इस्तेमाल जिस तरीके से सर, किया वो बिल्कुल मैं गया, agree नहीं करता हूँ, देखिए गलत ये हुआ। आप जी, सॉरी टू से, जी, if somebody, albeit person not even fully authorized, is doing something to help the nation, help the Supreme Court, you should say strike down because they're not following some perceived letter of the Constitution. That will be a stretch. If Sir, this power had been given to the Federal Shariat Court, if it had been given to some secretary in the government or to the parliament even, then you could say, yes, we एक appeal दे दी, in a fit of rage, a judge says, so and so political party, I hereby ban it. खत्म, कोई solution नहीं है इसका, except review, right? आप You know, in a fit of rage, या आपकी बात किसी को पसंद नहीं आई या कुछ ऐसी बदमज़गी हो गई, हो जाते हैं, इंसान दोनों तरफ होते हैं। जी। हम यहाँ बन करके वो फरिश्ते नहीं सर, बनते, मैं हम ये- इंसान ही रहते हैं। मैं- फिट ऑफ रेज में उन्होंने कर दिया ये, तो कोई इसका सोल्यूशन ही सर, नहीं। मैं कहता हूँ आप बिल्कुल होनी चाहिए राइट ऑफ अपील, बिल्कुल होनी चाहिए। इट्स ओनली द मेथड, बिल्कुल होनी ये तो चाहिए। मेथड आप जी, मेथड मैं विल देखिए नॉट, आप हमें हमें तो हम कॉन्स्टिट्यूशन पे it's चल like रहे a patient dying on the, it's like a patient dying Sir, on, सुन लीजिए, patient dying somewhere, a person received a gunshot wound, is lying somewhere on the street, ठीक है? Now, someone is not a doctor, but knows a little bit of medicine. He does something, tries to press him thing. Ideally, it should be performed by the doctor. So he said, no, don't do it. Wait for the water to come, wait for him to die. And he, of course, he's not a doctor. He may be a quack, or he may just have seen some television shows, and he may just be applying some first aid, medical trade, who's not a doctor at all, not even a nurse, to save the person. So इसमें ये बात हमें बिल्कुल इसको नजरअंदाज कर दें इसका। आप फिर शुरू में तो आप लोगों ने अटैक कर दिया था इंटेंट ऑफ पार्लियामेंट पे, तो मैं तो कह रहा हूँ इंटेंट ऑफ पार्लियामेंट इज गुड। तो मैंने इंटेंट पार्लियामेंट को नहीं नहीं, किया। इस साइड से लोगों ने किया है, जी, उन्होंने लोगों कहा ने किया, जी मैंने नहीं पर्सन किया। मैं स्पेसिफिक कहता लॉ हूँ, है, जी, हमें बता दें पर्सन Parliament स्पेसिफिक कैसे है। cannot be debated here. I So you never are- said that. you I are- said that this law may be one of the good laws. But the point is that the way it has been done is unconstitutional. That is my case before your lordship, my humble submission. और देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी The question is where the constitution has put up a scheme of separation of powers as to who can do what. There is a reason, there is a rationale, and there is a philosophy behind it which has been developed over centuries of jurisprudence. If we open the door, and this is a question of opening the door. If we open the door for the parliament to interfere in every matter that the Supreme Court may or may not take up, then there is no end to it. There would be good legislation and there would be bad legislation. How do you differentiate? The differentiation is put in the constitution by the framers. This is what you can do and this is what you cannot do. Yes. Whether you want to do something good, if the constitution prohibits you to do it, and the constitution does not totally prohibit you, it says if there is something which should be in the constitution is not immune from being amended to do that good. Yes. But to confer this power on the parliament and say whatever you do, even if it is beyond the constitution, if it is good, it's good. Yes. That is not how constitutions work. Yes. My humble ये देखिए इसमें एक सेकंड है, ये ना ये जो रैशनल जो है हमारे रैशनल और रीजन और फिलॉसफी जो होती है, we tend to forget when there's trampling of boots. Then all these things, nice philosophies go out of the window. The only difference between a constitutional amendment and a law, the only difference is a numbers game. Do you have 2/3 majority? It's the very same persons doing the lawmaking, the same parliamentarians who are making law. It's no difference, just a question of numbers. Suppose a political party comes to power on the pledge, they're going to provide 184(3). They win the election. They don't have the numbers for 2/3 majority. So they are helpless. Even though it was a pledge to the nation that we will go, the first thing we're going to do is do this. So at the end of the day, it's a numbers game. But if it's a numbers game, then we should also realize the traumatic history of Pakistan. Irrespective of numbers, irrespective of the entire nation, one person comes
and then parliament is held at whatever it is held at, and 269, 270, 270 AA, and everything is done is all right. It's a post-effect rubber stamp, done illegally, endorsed by parliament by amendment to the constitution. That's all right. We forgo the history. Hey, America में ये चीजें नहीं होती. When we are so particular about the full stops and the commas, then we should also say it has not yet happened in America. It may happen tomorrow. It has not yet happened in the UK other than Cromwell. So we should not forget, we should keep in mind the history of the nation also, which is a very fragile history. It's half a country today because of these acts. So let's not cripple the parliament completely when they are doing good because they don't have the numbers, 2/3 majority. That's all the argument is left with. 2/3 से कर लें, ठीक है. आपका एक वोट कम है, आप नहीं कर सकते हो. That's what it boils down to that. Sir, my lord, to defend, protect, and preserve the constitution. If the constitution For the people of Pakistan. If that is the thing, then फिर हम आपसे वही सवाल पूछेंगे कितने लोगों ने किया है इसको. then constitution gives a mechanism, a procedure. You can, my lord, with utmost respect, it is not a numbers game. It is a constitution put, the framers said if a constitutional amendment has to be made for the people of Pakistan, because they are representing where the independent judiciary will be fully secured, then you have that number games. It is the constitutional requirement. आप सिर्फ notice पे, you were not agitated enough either to vote in to have filed your own petition. You have filed your own petition. No, or you're on notice. Notice, sir. ठीक है, so you were not agitated enough to have filed your own petition. ठीक है, some people came and filed their own petition. So if you were so agitated, you should have done it the very first day yourself. Supreme Court, it would have been very nice to see Supreme Court Bar Association. जो cases file के वो तो take up नहीं हो रहे जो Supreme Court और वो क्यों नहीं हो रहे take up क्योंकि आप ये केस को खत्म ही नहीं करना चाहते हैं. ऐसी बात नहीं है सर. खत्म करें. Election petition pending. The constitution says we the people ये of excuse me Pakistan जरा हमें भी give क्वेश्चन करने का टाइम ourselves- दिया जाए. give ourselves the following constitution. जी. Now, the people of Pakistan have said, if we want to amend the constitution, जी. we would do it through our चलिए ठीक है, ये representatives, argument हो गया, आगे बढ़ते हैं. 3/4. चलिए ठीक है, समझ गए 3/4 का argument. चलें चल आगे बढ़ें. Mr. Zubairi, क्या मैं सवाल कर सकती हूँ? Excuse me. जी पूछिए जैसे. My lord. जी, the act says that subject to constitution and law, they have amended, they either taken the power of the Supreme Court by making rules. So what article of the constitution they have referred to and which law they have referred to? They have referred. Amendment has been made. जी. We are opening the doors जी, बिल्कुल सही. in future for amending the Article, constitution. my humble submission is Article With 175. simple majority. 175(2) has been read in isolation to amend this law. Basically, an amendment has been done in the constitution by amended by 175(2). And my humble submission is 175(2) cannot be read in isolation. It has to be read with Article 142A and anti-55. अगला point बताइए. जी, point is with Mr. Zubairi, if I may, Mr. Mr. Zubairi, my lord. Mr. Zubairi, if I may ask you and follow up on what my learned colleague has said, that when constitution is being amended, it is constituent power that is Yes. being exercised. My lord. It is a unique power, quite separate and different from the Legislative. other legislative competence that is available to parliament. So I think what my learned colleague is saying is, if we open this door जी. of an indirect amendment to the constitution, we are allowing Floodgate. constituent power. It is not a numbers game, if जी. I may say Yes. so, with all due respect. जी. It is a numbers game because it is constituent power. We are allowing constituent power to flow into a channel which the constitution prohibits जी. directly or indirectly. जी. So therefore, I think the point that my learned colleague has made, that this is an at most or at worst perhaps an indirect amendment of the constitution, which is perhaps barred by the constitution itself. Sir, tomorrow if this law. नहीं tomorrow नहीं अभी हम यही देखते हैं. If this नहीं law अभी is upheld, ये बिल्कुल for हम नहीं example, करेंगे. then the parliament can No, also no, decide no, that the no, last no, junior most no, judges will. No, जी. no. जी. Yeah, you cannot, you have a particular case, argue that. What happens tomorrow, I am not one who gives judgments on the basis of conjectures and surmises. इस पे कर लें, आप बहस खत्म कर लिया, आप वही पॉइंट बार बार दोहरा रहे हैं. जरा जल्दी खत्म कर लें ना, आपका वक्त निकल जाएगा You दूसरों are का. representing the Supreme Court Bar Association.
you're not petitioner nor respondent. क्या आप ये बेहतर नहीं था कि आप आके कहते हैं कि जनाब इस एक्ट को पेश करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? मेरे ख्याल में जरूरत इसलिए महसूस हुई कि हमने 184(3) के पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर इस्तेमाल किए, क्योंकि अगर आप इसकी वर्डिंग पढ़ें उसमें सिंपल बात यह है, फिर से अगर आप पढ़ लें, मैं पढ़ता हूं आपके लिए, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 199, द सुप्रीम कोर्ट शैल, if it considers that a question of public importance with reference to the enforcement of any fundamental right conferred by chapter 1 of part 2 is involved. हमने जो ऑर्डर्स किए, हम तो लोगों को सजा भी देते हैं, हम लोगों को बरी भी करते हैं, हम चीनी की कीमत भी मालूम करते हैं, बहुत सी चीजें करते हैं। क्या ये अगर हम अपने इस डोमेन में रहें तो किसी लॉ या रूल की जरूरत पड़ेगी? मेरे ख्याल में नहीं। सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा ये नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ कि जी ये आप पावर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गलतियां की होंगी, लेकिन पार्लियामेंट उसे सही नहीं कर सकती इस लॉ के थ्रू। दैट इज माय केस। अगर आप करेंगे तो आप खुद करेंगे सर, ये अपने रूल्स में अमेंड करके सर। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर पावर नहीं, आप अपने रेगुलेट करेंगे अपने रूल्स और प्रोसीजर को। गलती अगर आप कहें तो आप उसको करेक्ट करें, आप उसमें रूल्स अमेंड, अपने रूल्स अमेंड करें, उसमें आप अच्छा चलिए आप जुबैरी यू आर रिपीटिंग योरसेल्फ। अगर हम किसी और को मौका देते हैं, यू जस्ट रिपीट। नहीं, यू वांट टू कैन इफ यू रिपीटिंग योरसेल्फ विल आस्क हियर समवन एल्स। 184(3) is original jurisdiction जी, conferred by the constitution, जी, and it is the original jurisdiction, and if appeal is given, that would continuation of the proceeding before the original court. yes, This is settled you will have a super It is super settled Supreme law. Court. जी, Any provision of the constitution where appeal is given by a simple legislative power by the parliament, that is permissible under the law. no, my lord, under the constitution it is not, sir. That's my, and may I just quickly take your lordship? Zubairi Saab, how would you explain enlargement of jurisdiction? Yes, I'm coming to that. And per conferring supplemental Yes, my lord. powers? जी, जी, Because you see, they have to be interpreted liberally जी, as already laid down by this court. number of cases, sir. My lord, humble sir, एक बस एक आप करके फिर खत्म करूंगा। Directly उस पे आ जाए ना। जी, if the parliament मैं is कह रहा हूँ कि जी, competent to Parliament enlarge the sir कोई jurisdiction जी enlarge, and also to confer any supplemental yes, power. my humble submission is appeal जो पार्लियामेंट ने दे दी इसके अंदर, तो कल किसी चीज को भी अमेंड नहीं, करके नहीं, सुप्रीम आप कोर्ट को इसको- दे सकते नहीं, हैं। आप देखें ना, आप पहले इसको तो जरा रूल kindly 50 explain कर दीजिएगा। अगर तो वो jurisdiction expand कर सकती है पार्लियामेंट, तो फिर उनका इख्तियार है। नहीं सर, with utmost respect, sir. How do you read जी, this I'm provision? reading. I'll take help from a judgment of this court, 2000 SCMR, page 567, and the relevant portion is at page 617, sir. And let's read this paragraph to answer your lordships and my lords. 2000 SCMR, page 567, province of Punjab is the National Industrial Cooperative Credit Corporation. इसमें through a provincial law, appeal was provided to the Supreme Court. That was struck down. Though a judge or cooperative judge was a judge of the Honorable Supreme Court, that was said that is fine. But when the appeal was granted, it was struck down. And this is what the Honorable Supreme Court had said. My lord, kindly see page 617, para 17. Page 6. 617, my lord. Starts at 567 and page 617. And the appeal के बाद may I just read? We lost a page. Coming now to the present Constitution of 1973, it may be of the para 17, sir. It may be observed that according to the Learned Council for the Government of Punjab, in view of Article 175(2) of the Constitution, under which jurisdiction can be conferred on any court, including the Supreme Court, by or under any law, in relation to matters in respect of which provincial legislatures have power to make laws, including cooperative societies, additional supplemental jurisdiction or powers can be conferred on the Supreme Court by provincial legislatures. The law mentioned in Article 170 includes a provincial law and additional supplemental jurisdiction on powers and form an appeal to the Supreme Court under Section 22 of the Imperial Laws being conferred on the Supreme Court in respect of a matter which the provincial have exclusive jurisdiction under the Constitution to enact laws. Now, since judgment is quoted and the finding of the court at the bottom of the page. In view of there is no ambiguity interpreting entry 55 or part 1
of Federalist Legislative List for Schedule 73 Constitution. Such entry read with Articles 175(2) and 142A of the confers exclusive powers on the Parliament to make laws for enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court or conferring on it supplementary powers. If entry 50 was not there in the federal legislatures, it could be argued that under Article 175(2) of the Constitution, in respect of matters relating to corporate societies exclusive falling under the comprehension of provision, a law can validly be made by a provincial enlarging jurisdiction of Supreme Court and conferring on its supplementary power. But Article 175 is not to be interpreted in isolation. It has to be read and interpreted along with Article 142A and entries in the legislative list. Under entry 55 of the federal legislature is competent to make laws regarding jurisdiction. Actually, you're not reading the relevant part. The relevant part are two lines. जी. The last is 616. The last line पढ़ लीजिए. The two lines following that. That's what is the answer to the present question. 616 की last line पढ़िए page पे. जी, from the aforesaid. From the aforesaid entry, it follows that under the interim constitution, additional supplementary jurisdiction could only be conferred upon by a law made by. Yes, sir, interim constitution. आप पढ़ तो लेना. Provision तो वही है ना. जी. By a law by the federal legislature. नहीं सर. वहाँ issue सिर्फ इतनी सी थी. जरा समझने की कोशिश करें ना. आप जरा सुन तो लीजिए ना हजूर. वहाँ सिर्फ ये बात उन्होंने कही कि जी सूबाई उसको पावर नहीं है और स्पेसिफिकली ये जुमला इस्तेमाल कर दिया फेडरल लेजिस्लेचर कर दे तो वो प्रोविंशियल बात तो हम भी मानते हैं मतलब मैं कम से कम मैं तो बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं इस बात पे उसकी एंटी 55 में एनलार्जमेंट की बात नहीं की हुई थी 72 की आप जुबैरी साहब जी इसको पढ़ लूं सर प्लीज आप एक मिनट मैं आपसे इसके 4 लाइनें पढ़ लीजिए उससे पूरा जवाब आ गया 618 पेज पे आइए आ रहा हूं उसी फर्स्ट पैराग्राफ जी लास्ट 4 लाइंस हाउएवर से पढ़ दीजिए सर मैं यहां इसके ऊपर भी बड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ दीजिए वो क्रक्स है जो उसका इशू है वो अदब इसमें आ रहा हूं जो माय लॉर्ड्स क्वेश्चन वाज अच्छा फिर आप फिर छोड़ दीजिए फिर हम अगर आप समझते हैं आप शाम तक चलाएंगे इसके बाद सुबह से आपको दे रहे हैं टाइम दो लाइनें ये हाउएवर से पढ़ दीजिए ना दैट इज लंबे पैराग्राफ पढ़ेंगे दैट इज द क्रक्स हाउएवर से पढ़ दीजिए However, jurisdiction of Supreme Court can be enlarged. Supplementary powers can be conferred on Supreme Court by law in view of Article 175(2) of the Constitution, entry 55, read with Article 142. Leave no doubt that the larger jurisdiction conferred supplementary powers can only be done through law made by federal. लेकिन ये है सर लेकिन इसका ऊपर वाला रेशियो ऑफ द जजमेंट ये रेशियो है बस रेशियो ऊपर भी है सर अच्छा अब आप हम आपको खत्म कर रहे हैं सर एक मिनट सर एक मिनट आपसे पढ़ा है दिस इज मेयर रीस्टेटमेंट ऑफ व्हाट इज रिटन हम पढ़ लेंगे ना यार देखिए ये हमारा काम नहीं आप हमने बता दिया हमने नोट कर लिया सर लेकिन जो असल उसका क्रक्स वो अगर आप सॉरी टू से अब हमें एक ही इंप्रेशन मेरे ध्यान में क्रिएट हो रहा है कि आप चाहते हैं कि 184 टीम के केसेस जो लगे हुए लगे नहीं कोर्ट में क्योंकि आप चाहते हैं कि खत्म ही ना हो कभी तो बस आप खत्म कर दीजिए ना आपने बता दिया हम पढ़ लेंगे शुक्रिया मैं कह रहा हूं आइसोलेशन में नहीं पढ़ा अच्छा अब आप कोई और पॉइंट है तो हम सुन के आपको दोबारा नहीं सुन रहे हैं दूसरा पॉइंट जो है कि जी इसके अंदर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दिया 18 सेक्शन 5 के अंदर कि जितने केसेस हैं वो सब खुल सकते हैं इसमें पहले जरा क्लैरिफाई कर दीजिएगा जी ये जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है ये सिर्फ 184(3) के लिए है जी अगर किसी ने 188 के तहत रिव्यू एक्सरसाइज कर ली है उसके लिए नहीं है देयर इज नो अपील अगेंस्ट रिव्यू सो देयर वुड बी हार्डली एनी केस लेफ्ट फॉर दिस अपील टू बी एक्सरसाइज ठीक है सर आप सही कह रहे हैं लेकिन पॉइंट इज दैट इट इज द गिविंग ऑफ पावर हु कैन गिव दैट पावर अपील आप बता देना उसका इफेक्ट क्या है इसका इफेक्ट ये है कि हार्डली एनी इफेक्ट सर मुझे नहीं मालूम कि इट इज नॉट अ पावर अगेंस्ट अ रिव्यू आई एम नॉट देयर टू से कि कितने केसों में रिव्यू हुआ है नहीं बास केसों में नहीं हुआ होगा रिव्यू उसके ऊपर तो राइट खुल जाएगा फ्रॉम 1973 आपको घबराहट क्यों है हमारे काम बढ़ जाएगा ना घबराहट की बात नहीं है मैं समझना चाह रहा हूँ सिर्फ ये केस घबराहट से आर्गुमेंट नहीं है आप कॉन्स्टिट्यूशन या तो प्रिवेल करेगा या नहीं करेगा अब वी हैव नो टू वेज आइदर द कॉन्स्टिट्यूशन के ठीक है बार-बार ये बात रिट्रेट ना करें नहीं समझ गए कह रहे हैं घबराहट तो नहीं हो रही सर घबराहट तो नहीं हो पॉइंट इज दैट कि आइदर कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है या नहीं देता ये कॉम्पिटेंस है या नहीं सुन ली बात है ना बार-बार कहने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता है ना खत्म अब हम अगले जो होंगे सुनेंगे उनको अगर उनको आपको 20 मिनट सुनेंगे ठीक है थैंक यू सर जी नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत जारी है फिल वक्त के लिए इफेक्ट है ये सिर्फ 184(3) के लिए है जी अगर किसी ने 188 के तहत रिव्यू एक्सरसाइज कर ली है उसके लिए नहीं है
there is no appeal against review. So there would be hardly any case left for this appeal to be exercised. ठीक है सर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन So- point is that it giving of power, who can give that No, no. power appeal? आप बता देना उसका इफेक्ट क्या है? इसका effect ये है It कि has hardly any effect सर मुझे नहीं मालूम because it कि is not a power मुझे- against a review. आई एम नॉट देयर टू से कि कितने केसों में रिव्यू हुआ है, नहीं पास केसों में नहीं हुआ होगा रिव्यू, उसके ऊपर तो राइट खुल जाएगा फ्रॉम 1973। आपको घबराहट क्यों है? हमारे काम बढ़ जाएगा ना। घबराहट की बात नहीं है, नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ सिर्फ ये केस घबराहट क्यों में नहीं, घबराहट देखें, से आर्गुमेंट नहीं है। आप केस कॉन्स्टिट्यूशन या आप तो प्रिवेल या नहीं करेगा। अब वी हैव नो टू वेज, आइदर द कॉन्स्टिट्यूशन के ठीक है, बार-बार ये बात जी। रिट्रेट ना करें, नहीं, मैं समझ आप गया एक कह रहे दफा। हैं कि घबराहट तो नहीं हो रही सर, घबराहट तो नहीं हो। पॉइंट इज दैट कि आइदर कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है या नहीं देता, ये कॉम्पिटेंस है अच्छा या सुन नहीं है। ली बात ना, जी। बार-बार कहने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता है ना। खत्म, अब हम अगले जो होंगे सुनेंगे उनको, अगर उनको आपको 20 मिनट सुनेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। विश्व की तरफ से एक दो हैं। हाँ, इसमें ठीक है, वही अपील कर दें। ठीक है, हाँ? घबराहट की हालत है। मैं कह दिया ना, सुना दिया ना मैंने। सिर्फ आपको